Before starting the chapter polynomial, let us understand the basic concept of polynomial. So, what is polynomial? Polynomial has term. Always remember that polynomial has term. So, how many term? Monomial, binomial and trinomial. They all are the parts of polynomial and they all are terms. Polynomial has constant coefficient. That means 2x square, okay, 5x square, they all are constant coefficient. And polynomial has now here you can see this polynomial has variable. Polynomial always carry alphabet, and alphabet is nothing but variable. Number which carries alphabet and variable are known as constant coefficient. Number which carry only variable, alphabet, variable. Polynomial should be in standard form, that means decreasing order, or we can say that descending order. Polynomial should be in standard form. Now here last is polynomial should not have negative power. Okay, polynomial should not have negative degree or power. It does not carry negative degree or power, we can say. Always remember that these all are the examples. So 5x square plus x and minus 4. How many terms are there? There are 3 terms. So 5x is the first term, x is the second term and 4 is the third term. That means it has 3 terms. So they are like a neighbors. They are like a neighbors. So 5x square, x and minus 4. They are like a नेबर्स. ओके, वो लोग एक नेबर जैसे रहते ना, पड़ोसी, वैसे है. कौन से टर्म्स? ये 3 टर्म्स, यानी कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. जब 5x स्क्वायर के साथ सिर्फ x है तो वो बाइनोमियल हुआ, लेकिन वही इसके साथ अगर -4 भी आ जाता है तो वो ट्राइनोमियल है. तो टर्म्स जो है ना वो नेबर्स है. ऑलवेज रिमेंबर दिस. पोलिनोमियल हैज़ कांस्टेंट कोएफिशिएंट. अभी इन्हीं के अंदर देखो, आप देख सकते हो नंबर्स है और साथ में कुछ अल्फ़ाबेट है. तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट क्या है? ये नंबर्स है. एक्स स्क्वायर के साथ 5 है, एक्स के पास कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वहाँ इनविजिबल 1 है. और लास्टली -4 जो है वो 4 है. ठीक है, तो यहाँ पर ये 5, 1, 4 ये क्या है? कांस्टेंट लाइक फैमिली. जैसे हमारी फैमिली कैसी रहती है? हमेशा एक लविंगली रहती है. तो कांस्टेंट आर लाइक फैमिली. दे विल नेवर चेंज. वो कभी भी चेंज नहीं होंगे. 5, 1 एंड 4 यहाँ पर पोलिनोमियल के जो ऑर्डर्स है, यहाँ 5, 1 एंड 4 जो यहाँ पर कांस्टेंट कोएफिशिएंट का रोल प्ले कर रहे हैं. तो ये क्या है? फैमिली है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. 5 और यहाँ पर x के पास कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर इनविजिबल 1 है. और लास्टली -4. सो 5, 1 एंड 4 आर लाइक कांस्टेंट कोएफिशिएंट. नाउ वी विल सी पोलिनोमियल हैज़ वेरिएबल. तो यह जो x है ना, ये वेरिएबल है, जो है ना फ्रेंड्स की तरह होते हैं. फ्रेंड्स कैसे होते हैं? बार बार चेंज होते रहते हैं. हमारे स्कूल के फ्रेंड्स अलग होते हैं, ट्यूशन के फ्रेंड्स अलग होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स अलग होते हैं, वर्क प्लेस के फ्रेंड्स अलग होते हैं. तो वेरिएबल लाइक फ्रेंड्स. वेरिएबल क्या होते हैं? फ्रेंड्स की तरह होते हैं. दे मे चेंज टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, वर्क प्लेस फ्रेंड. ठीक है, सो यहाँ पर जो x है, ठीक है, ये क्या होगा? बार बार चेंज होते रहेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर वेरिएबल जो है वो क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे. लेकिन कांस्टेंट कोएफिशिएंट फैमिली की तरह है, जो हमेशा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक सेम रहेंगे. जैसे 5, 1, 4 वो कभी चेंज नहीं होगा. लेकिन ये जो x की वैल्यू दिख रही है यहाँ पर चेंज हो सकती है. तो इसीलिए वो क्या है? फ्रेंड्स है. याद रखना. अभी यहाँ पर डिग्री क्या है? स्टैंडर्ड ऑर्डर है. देखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है. फर्स्ट का स्क्वायर है, सेकंड की डिग्री 1 है. जहाँ पर कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है. अभी 4 के पास तो इंडिविजुअल कांस्टेंट वैल्यू है, तो वहाँ पर क्या हो गया? 0. तो 2 इज़ द ग्रेटर 1 इज़ द उससे थोड़ा छोटा, and lastly 0 is the सबसे छोटा वाला part. So 2, 1 and 0. You can see this. These all are the standard form polynomial. They all are in decreasing order. They all are in decreasing order. As you can see here, 5x square, x का पावर जो है वो 1 है और 4 का पावर जो है वो 0 है. So square, 1 and 0, they all are decreasing order. Always remember this. These all are very important. So here as you can see this 5x square, 1 and 0. So square, 1 and 0, they are decrease or they are degree or power are never negative. Okay, degree or power are never negative. Always remember this. Is that clear? Now let's see the other one. Same topic, degree of power is always present on variable.
डिग्री और पावर जो रहता है ना वो हमेशा है ना वेरिएबल के साथ प्रेजेंट होता है. सो 5x स्क्वायर यहाँ पर आप देख सकते हो तो वेरिएबल के साथ प्रेजेंट है. जो ये स्क्वायर है वो x के लिए है. यहाँ पर x की वैल्यू के पास कितना पावर है 1 है एंड लास्ट 4 के पास क्या है 0 है. सो स्क्वायर 1 and 0 5x square. Here we can say all the terms here we can see all the terms easily. ठीक है, हम यहाँ पर सारे terms easily देख सकते हैं. So 5x square 1x and -4. So coefficient is always 1, power is always 1. कोइफिशिएंट जहाँ पर इंडिविजुअल 1 है तो वहाँ पर पावर भी क्या रहेगा इनविजिबल 1 रहेगा. सो 4x 0 पावर इज 0. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो लास्ट में 0 था. नाउ लेट्स लर्न पोलिनोमियल इन डिटेल. सो पोलिनोमियल हैज़ मेनी पार्ट or terms. So polynomial has many part or term, that means ax plus bx and plus c. So ax plus bx plus c. Here a, b and c are constant coefficient and x is the variable. So ax is the first term, bx is the second term and c is the third term. But question arise, who will do the parts? Who will do the parts? So how we will do this part? So we will do the parts with the help of plus or minus sign. Okay, we will do the part with the help of plus or minus sign. But how? कैसे हम करेंगे? तो let's see. 5x square is the first term, x is the second term and 4 is the third term. ठीक है, अभी ये पार्ट तो हो गया. अभी यहाँ पर हमको साइन का यूज़ करना है. तो फर्स्ट के लिए हमने प्लस की साइन लगाया और सेकंड के लिए माइनस. सो 5x स्क्वायर प्लस x एंड -4. नाउ हियर यू कैन सी दिस 5x स्क्वायर इज द फर्स्ट टर्म. सो 5 इज a. ओके, 5 इज a. b इज what? As you know that here there is no number is given. So as I told you before, जहाँ पर कोई नंबर नहीं रहता. So what is b? जहाँ कोई नंबर नहीं रहता वहाँ invisible 1 रहता है. So as you can see here 1 is written. Okay, so 1x. How many x is there? 1x. And lastly 4. Okay, lastly the third term is 4. Finally we get the answer. So 5x square plus 1x minus 4. Is that clear? Now let's see the types of polynomial. As you know that there are types of polynomial. As you know that there are 3 types of polynomial. Now let's learn types of polynomial on the base of terms. So first term is known as a monomial, second term which carries binomial and third term that means trinomial. As you can see here 5x, 2x square minus 3y square, they all are monomial which carry one term. So 5x is one term, 2x square is one term and minus 3y square is one term. As you can see here all they all are single terms are given. Okay, they all are single terms. As you can see जब हम साइकिल राइड करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर only 1 person riding this cycle ना. So monomial. Okay, so always remember my dear students, monomial is not a polynomial. Monomial is not a polynomial. Okay, but it is the part of polynomial. Monomial is not a polynomial because polynomial have a many term. Polynomial always have many term more than the single term, more than the one term. But always remember monomial have only one term. Okay, monomial have only one term, but monomial is a part of polynomial. But we can say that monomial is a part of polynomial as you can see here. Okay, monomial is a part of polynomial. Now let us understand the second term that is known as a binomial. What is binomial? Binomial is a term which carries two terms. Binomial which carries two term. Always remember binomial वो होते हैं जो two terms को carry करते हैं. For example a plus b, a square plus b, a plus b the whole cube, they all are binomial. So here 5x square plus 3 is the two term, y plus 1 again two terms, 2x cube minus 1 two terms. So binomial carries two term. As you can see here this man is riding this cycle. So how many tires are there? There are two tires. Okay, so how many terms?
binomial. Now let's see here binomial contain two term. As you can see साइकिल में कितने टायर्स रहते हैं, 2 टायर्स रहते हैं, तो वो क्या है, बाइनोमियल है. Now let's see the third one, that is trinomial. Trinomial always carry 3 terms. As you can see here, 3x square plus 2x minus 1. So 3 terms means trinomial. 8y cube minus 3y square plus 2. Again ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स. अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटो रिक्शा. ऑटो रिक्शा में कितने व्हील्स है, देयर आर 3 व्हील्स, 3 टायर, सो यू कैन से दैट ट्राइनोमियल. ओके, सो मोनोमियल का मैंने एक सिंगल टायर का एग्जाम्पल दिया था, बाइनोमियल के लिए मैंने एक बाईसाइकिल का एग्जाम्पल दिया था, और ट्राइनोमियल के लिए मैंने एक ऑटो रिक्शा का एग्जाम्पल दिया है. ठीक है, सो नाउ let us understand types of polynomial in detail. Okay, so types of polynomial on the base of term we have saw. Now we will see the types of polynomial on the base of degree or power. Okay, now we are seeing the degree or power. So linear polynomial, quadratic polynomial and the cubic polynomial is the third one. Linear polynomial is the first one. So 5x 2x plus 11 minus 3y plus 1. So here always remember linear polynomial carry power 1. Okay, always remember linear polynomial carry always power 1. Okay, so therefore here therefore in the linear equation highest degree is 1. In the linear equation highest degree will be always 1. Okay, so as you can see here 5x power is 1. Now quadratic highest degree is square. So 5x square plus 3y square plus 1 2x square minus 1. So here degree is square. So square are written. So they all are quadratic equation. Now here you can see this. Therefore in the quadratic polynomial highest degree will be square. Quadratic equation highest degree will be always square. Okay, this you have to remember. Linear equation highest degree is 1 and quadratic equation highest degree is square. Now 3x cube plus 2x cube plus 3x cube plus 2x cube minus 1, 8y cube minus 3y cube plus 2. Here highest degree is cube. Highest degree is cube. So we can say that here the highest degree is cube. So we will write here therefore in the cubic polynomial. Okay, therefore in the cubic polynomial highest degree is cube, always cube. Okay, always cube. Highest degree will be always cube. Okay, so therefore in the cubic polynomial highest degree will be always cube. So this all are the polynomial degree. Now let's solve one basic question. So it is there in your textbook, x plus 7. Okay, first we will see the types of polynomial on the base of term, and then we will see types of polynomial on the base of degree or power. So these are the question inside this circle: x plus 7, x square, x cube plus x square plus x plus 5, 2x square plus 5x plus 10, x cube plus 9, 3x square plus 5x. Now cubic polynomial are those which carry cube, power cube. Okay, so here you have to write cubic polynomial. Okay, and here you have to write trinomial. Okay, so trinomial which carries 3 term. Always remember trinomial which carries 3 term. So and now here trinomial, binomial. Right hand side we will find the terms. So binomial, trinomial and monomial, they are term. Now here left hand side cubic polynomial, quadratic polynomial, you can write here quadratic polynomial. Just you have to classify and write. Okay, so quadratic polynomial, and lastly here monomial and linear polynomial, linear equation. Okay, we can write here linear polynomial. So linear polynomial which carries degree 1, cubic polynomial which carry degree cube, and quadratic polynomial which carry degree square. Now here last one is monomial. Monomial is a term, trinomial is a term, binomial is a term. Always remember. So now here first we will write answer
First we will write quadratic polynomial. Okay, so answer for quadratic polynomial are x square 2x square plus 5x plus 10 comma 3x square plus 5. Why? Because their degree is square. Cubic polynomial degree is cube. Always remember. So x cube plus x square plus x plus 5 comma x cube plus 9. So degree is cube. Linear polynomial carries degree 1. Okay. So now here x plus 7 carries single. Binomial are double terms, two term, x plus 7 two term, x cube plus 9 two term, 3x square plus 5x two term. Trinomial carries three terms, so 2x square plus 5x plus 10. Trinomial. Monomial which carries single term, that is x square. Is that clear, my dear students? Now let's solve practice set 3.1 on the base of these examples. Okay. So open your textbook, we will solve practice set. Solve practice set 3.1, question number 1. Here, state whether the given algebraic expression are polynomial, justify. Whether the given expression is polynomial or not polynomial. Here we have to justify. That means we have to find. So our first expression is y plus 1 upon y. So here as you can see this y plus 1 upon y is the algebraic expression. Now here we have to prove that whether it is a polynomial or not. So y plus 1 upon y, that is equal to y plus y y minus 1. Okay, y plus 1 upon y is equal to y plus y minus 1. So this plus sign will become minus. Okay, so the reverse effect is negative. If it is moving from left to right, then it will become negative. So here y plus y, okay, and minus 1. So as you can see here, y plus y minus 1, because it is changing, it's changed its sign. Why? Because it is moving from left to right. Okay, and here always remember the expression should give the degree 1, that only it will be an algebraic expression of a polynomial, otherwise it is not. Okay, it is always accept natural number, but it will not accept the whole number. Whole number means the number will start from 0. So always remember that degree should be 1 or more than 1 to be a polynomial. So here as you can see here, y plus 1 upon y is equal to y plus y minus 1. This plus 1 will change into minus 1. Okay, plus 1 will change into minus 1, and here as you can see this, the degree is not 1. Okay, so if the degree is not 1, that means it is not polynomial. So this is not a polynomial because index of y is second term. Index of y is second term is negative 1. So as you can see here, negative number cannot be accepted when it is polynomial. So it is not a polynomial because it is negative. So 2 minus 5 root x. Second sub question, 2 minus 5 root x. So as you can see here, root x is given. Whenever root is there, that means degree is square. So 2 minus 5 root x is equal to 2 minus 5x 1 upon 2. Here 1 upon 2 is given. Okay, it is not clearly mentioned, that is why I have written separately 1 upon 2. Here you can say this 1 upon 2, 5x 1 upon 2. So how this 1 upon 2 come? 5 root x means here power is 2. Okay, so the number 2. Okay, so here we will take 1 upon 2, and as you can see the whole number cannot be accepted. So because index of x is not a whole number, so it is not a polynomial. Okay, so it is not polynomial. Third expression, x square plus 7x plus 9. See here, square, the first term, x square, 7x and 9. So here the degree is
square. So yes, it is a polynomial because indices of a variable in all terms are whole numbers. Okay, all terms are whole number. The first one is square, second one is 1, and the last one is 0. Okay, so x square is square, 7x is 1, and 9 is 0. So it is polynomial. So 2m, now 2m minus 2, the degree is minus 2. So again it is not polynomial. अच्छे से याद रखना, अगर डिग्री नेगेटिव है तो वो पोलिनोमियल नहीं है. सो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल बिकॉज द डिग्री इज़ नेगेटिव, बिकॉज इंडेक्स ऑफ m इज फर्स्ट टर्म इज negative 2. So negative 2 cannot be accepted. Negative 2 won't be accepted. So it is not polynomial. Now here last is 10. So 10 multiplied by x, and here 0 is given. X is 0. So index of x is 0. It is a whole number. It is a whole number. Okay. So here index of x is 0 and it is a whole number. 0 is a whole number. Write the coefficient of m cube in each of the given polynomial. Write the coefficient of m cube in each of the given polynomial. Now here we have to write the coefficient. So coefficient for m cube is 1. Okay, there is no number is given now, that means there is an invisible 1. So m cube, here m is the variable and there is no coefficient given, that means there is an invisible 1. So coefficient for m cube is 1. Okay, so coefficient for m cube is equal to 1. Now next question, minus 3 upon 2 plus m minus root 3 m cube. Now here again minus 3 upon 2 plus m minus root 3 m cube. Okay, so here root 3 is given. Okay, and m cube. So here coefficient for m cube is root 3. So here root 3 is the coefficient. Minus 2 upon 3 m cube minus 5m square plus 7m minus 1. Now here coefficient क्या है? Here you can see minus 2 upon 3 जो है वो coefficient value है. Okay, because m is the variable. So here minus 2 upon 3 is the coefficient and m cube is the variable. So coefficient of m cube is equal to minus 2 upon 3. Question number 3, write the polynomial of x using given information. Now here we have to write the polynomial for x by using the given information. Let's see what is the given information. Monomial with degree 7. Here we have to write polynomial form where degree is 7. So we can say that x power 7, or we can say that 2x power 7. Like this we have to take the example. Now here our first sub question says that monomial with degree 7. Okay, so here we have to consider this 7 in the degree place. Okay, and we have to use the variable which is known as a x, because question says that write the polynomial in x using given information. So first is 9x7. Okay, 9x power is 7, or we can say the degree is 7. Okay, so here we have used the variable that is x, also we have used the coefficient value that is 9. Okay, so 9x power 7. Binomial with degree 35. Now here the second sub question, degree is 35 and the term is a binomial term. Okay, the first one is the monomial and the second one is the binomial term. Now here we will use the degree 35 and here we have to use the alphabet that is x. So minus 2x, degree 35 minus 7x. See here x is the variable and 2 and 7 is the coefficient. Okay, constant coefficient are 2 and 7. So minus 2 and minus 7 are constant coefficient, whereas x is a variable and 35 is the degree. As our question says that binomial with degree 35. हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि डिग्री जो है बाइनोमियल की वो 35 है. That is why we have written minus 2x 35 minus 7x. Now let's third sub question, trinomial with degree 8. Okay, now here the three terms. So 11 upon 19 minus 5x cube. Okay, 5x8 cube plus 8x8. Okay, 5x cube is given and plus 8x8 is given. Okay, so here 11 upon 10 is the coefficient value, 5x is the
5x cube is the coefficient value, and here x degree 8 is the variable. So here degree is 8, so x8 is the trinomial degree which has 8. Okay, so x which has 8, so they are the trinomial. So as you can see here, monomial, binomial and the trinomial polynomial which has x value and the given degrees are given. So we use this and we have solved. Now on the base of this we will solve the next question, that is question number 4. Write the degree of the given polynomial. Now here we have to write the degree of the given polynomial. So here we have to write the degree of the given polynomial. So as you can see here, various sub questions are given and we have to write the degree of the given polynomial. So as you know that the degree जो होती है वो ऊपर की तरफ लिखी हुई होती है, ठीक है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर नंबर के साथ कोएफिशिएंट वैल्यू के साथ अगर अल्फ़ाबेट है तो वहाँ पर डिग्री 1 है, ठीक है. अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट इज़ ओके, बट अगर क्वेश्चन में डिग्री नहीं दी हुई है तो हमको वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होगा कि वहाँ पर कौन सी डिग्री है, ठीक है. अगर सपोज 5x है, ऊपर की तरफ आपको कोई डिग्री नहीं दिख रही है, तो वहाँ पर क्या डिग्री है, 1 है, बिकॉज x इज़ द वेरिएबल एंड x इज़ ओनली 1 वेरिएबल, तो वहाँ पर क्या आएगा, डिग्री 1. बट अगर सिर्फ √5 है तो वहाँ पर क्या आएगा, डिग्री 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू के साथ वेरिएबल मतलब जो रहता है वो 0 रहता है, ठीक है. सो वहाँ पर कितना आएगा, 0. और जो डिग्रीज होती है ना वो हमेशा अल्फ़ाबेट्स के लिए होती है. डिग्रीज जो होती है वो मैक्सिमम टाइम अल्फ़ाबेट्स के लिए होती है, ठीक है. जैसे x², x³, तो वो जो है वो डिग्रीज किसके लिए है, अल्फ़ाबेट यानी कि वेरिएबल्स के लिए. तो अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. अभी सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा √5. तो √5 जो है ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, समझ में, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है. कैसा कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, ठीक है. देखो इसके पास कोई अल्फ़ाबेट नहीं है ना, कोई वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं ना, अल्फ़ाबेट्स ABCD XYZ जो भी हो वो नहीं है. सिर्फ √5 क्या है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट. तो अभी यहाँ पर डिग्री क्या आएंगी, 0 आएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट ही यूज़ नहीं हुआ है. तो यहाँ पर जो है √5 के लिए डिग्री जो है ना वो 0 है. इज दैट क्लियर. अगर √5 है तो 0 है उसी की जगह, लेकिन अगर √5a रहता तो डिग्री क्या होती, 1 होती. क्यों, क्योंकि देयर इज़ द वैल्यू गिवन a. अगर a है तो 1 है, x है तो 1 है, लेकिन यहाँ पर ना x है ना a है ना कोई दूसरा अल्फ़ाबेट है, तो सिर्फ √5 है ना. तो जब सिर्फ √5 है तो हम इसके लिए डिग्री लेंगे 0. Is that clear, my dear students? So here we will write degree is equal to 0. Now x0 यहाँ पर तो दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन देखो, x की जो वैल्यू है इसके लिए डिग्री कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है, ठीक है. तो ये तो डायरेक्टली बोल रहा है ना x के लिए क्या है, डिग्री 0 है, ठीक है. तो यहाँ पर x जो है वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक है. और वेरिएबल के साथ जो डिग्री दी हुई है वो कितनी है, यहाँ पर 0 दिखा रहा है, 0 शो कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर. तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिग्री इज़ अगेन 0. क्यों, क्योंकि x खुद बोल रहा है कि उसकी डिग्री 0 है. अभी आप बताओ, आपके सामने ही दिख रहा है x², यहाँ पर डिग्री कितनी है, यू आर करेक्ट, स्क्वायर 2, यानी कि डिग्री यहाँ पर कितनी आएंगी, 2 आएंगी. तो आपको यहाँ पर सब क्वेश्चन 3 के लिए लिखना है x² है तो डिग्री जो है वो 2 है. Now here √2m10, इसका डिग्री कितनी है, 10 - 7. तो आप देख सकते हो m जो है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट और उसके साथ वेरिएबल भी आ रहा है. तो अभी ये जो 10 है, ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, 10 है ना, ये जो है वो डिग्री है, ठीक है. और 7 कैसी वैल्यू है, 7 एक कांस्टेंट है, तो 7 के पास तो 0 है, लेकिन 2m के पास क्या है, √2m के पास जो डिग्री है वो 10 है, यानी कि √2m की डिग्री 10 है और 7 की डिग्री 0 है, ठीक है. सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिग्री 10, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री तो 10 ही है. 2p - 7 √7, 2p - √7. अब देखो 2p के पास कितने वेरिएबल्स है, कौन से अल्फ़ाबेट है, ओनली p इज़ देयर. ओके, सो इफ़ p इज़ देयर दैट मीन्स डिग्री कितनी है उसकी, 1 है. इज़ दैट क्लियर. देखो ना, p के पास कितना डिग्री है, 1 है, लेकिन √7 तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट है इसलिए उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, लेकिन 2p के पास 1 आएगा. 7y - y³ + y5, ठीक है. सो हाईएस्ट डिग्री जो है वो है 5,
ओके, सो y5 जो है ना, y के पास जो पावर 5 है वो सबसे हाईएस्ट है. 1, 3 और 5 इन सब में जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 5. सो हम यहाँ पर लिखेंगे डिग्री 5 फॉर 7y माइनस वाई क्यूब प्लस y power 5. So here power 5, that means degree 5 is the highest degree. So the answer is degree 5. Is that clear? Now here we have solved how many questions? We have solved total 6 questions. Now let's solve 7 sub question. So question number 7, sub question 7, xyz plus xy minus z. Now here x कितने हैं? 2 है, that means 2 डिग्री है, x के लिए 2 डिग्री है. y कितने हैं? There are 2y, that means 2 डिग्री. Then there are how many z given? So z 1 time, okay. Now here we can see z 1 time and z 2 times. So 1, 2, 3. How many? 1, 2, 3, 1, 2 and 1. So x, y, z, there are how many alphabets? 3. Okay. X, y, how many alphabet? 2. Okay, and lastly z is how many? Single. So 3, 2, 1 is given. So here highest degree is 3. Is that clear? Highest degree is how much? Highest degree is 3, because x, y, z how many alphabets? 3 alphabet, 3 variable. X, y 2 variable, and lastly single z is given. So one variable. Okay, so here the degree is cube. So we will write here degree is 3, because x, y, z the first term carries 3 alphabet. So degree is 3. Now let's solve 8th one. M cube n7 minus 3m power 5n plus mn. Okay, so here highest degree is 7 and 7 is the highest degree. So m cube n7 is the highest degree. So here we will write n7. Okay, n7 is the highest degree. So here the degree 7 is the highest and 3m 5n is the smallest one, because here for m 5 is given and for n 1 is given. For m 1 is and n is 1. So here highest out of all n is the highest one. The first term is the highest term. So here degree is 7. Is that clear? So the first m carries 3 and here n is 7. So 7 plus 3 is how much? 10. So 7 plus 3 is equal to 10. Okay. So how is this 10 get? So m3 and 7. So add this 2 degree, 3 plus 7, which give us 10. So sum number 8 degree is 10. Is that clear, my dear students? So in this way we have solved all the sub question. Let's solve question number 5. Classify the following polynomial as linear, quadratic and cubic polynomial. Here we have to classify whether the given polynomial is a quadratic polynomial or a cubic polynomial. Quadratic polynomial where degree is square and cubic polynomial where degree is cube. Always remember this. Okay. Quadratic polynomial में जो डिग्री होते हैं, ऊपर के साइड के जो नंबर्स होते हैं वो कभी भी स्क्वायर होते हैं. ठीक है. और क्यूबिक पोलिनोमियल में जो नंबर्स होते हैं ऊपर के साइड के वो कभी भी 3 होते हैं. ठीक है. 3 बोलते हैं उसको क्यूब. ठीक है. और क्वाड्रेटिक में स्क्वायर यानी कि 2 नंबर होता है. कहाँ पर? जो ऊपर की तरफ जो डिग्री होती है ना, उसकी बात कर रही हूँ मैं. तो यहाँ पर ये आपको कुछ सम्स दिए जाएंगे, उसको आपको क्लासीफाई करना है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है. नाउ हियर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देखो फर्स्ट टर्म ही स्क्वायर है, 2x स्क्वायर. तो ये किस टाइप का पोलिनोमियल है? यू आर करेक्ट, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बिकॉज द फर्स्ट टर्म कैरीज, yes, first term carry degree square, that means it is a quadratic polynomial. Okay, so हम यहाँ पर लिखेंगे degree is square, it is a quadratic polynomial. Is that clear? क्योंकि first का degree ही square था. Now 5p is not a quadratic polynomial, it is not a cubic polynomial, it is a linear polynomial. और linear polynomial की तो yes, हमको वही identify करना है ना. linear polynomial कभी भी 1 रहता है, quadratic polynomial 2 रहता है और cubic polynomial 3. तो 5p में सिंगल 1 है. ठीक है, सिंगल 1 है तो इट इज़ ए linear polynomial. रूट 2y माइनस 1/2. यहाँ पर भी कितना है? 1 है. तो ये भी क्या है? लीनियर पोलिनोमियल है. ठीक है, हमको यही आइडेंटिफाई करना था ना. लीनियर पोलिनोमियल के लिए क्या है? 1 है.
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए स्क्वायर है. ओके, सो डिग्री इज 1, सो इट इज़ अ लीनियर पोलिनोमियल. It is a linear polynomial. As you can see here, root 2y na, so linear polynomial. M cube plus 7m square plus 5 upon 2m minus root 7. Now here highest degree, here 5 upon m, the degree is 1, here degree is 2, and here degree is cube, so highest degree is cube. Out of all, highest degree is cube, so here degree is cube, that means it is a cubic polynomial, the third one. Okay, so question number 4 is a cubic polynomial. So degree is cube, so it is a cubic polynomial. Always remember this. Okay, so if the degree is square, that means it is a quadratic polynomial. If the degree is cube, it means it is a cubic polynomial. Write the question number 6. Write the following polynomial in the standard form. Standard form means decreasing order. Okay, decreasing order means descending order. Okay, that means बड़े नंबर से लेके जो छोटे नंबर को होते जाते हैं उनको हम कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर. ओके, सो m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m. ओके, सो इट इज़ नॉट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म बिकॉज m क्यूब यहाँ पर डिग्री क्यूब है, 3 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स वो 0 है. 5m के पास क्या है, ओनली सिंगल वेरिएबल है, दैट इज़ 1. सो हियर m क्यूब प्लस 5m प्लस 3, ऐसा हमें उसको अरेंज करना होगा. अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, बड़े से छोटा. सो यहाँ पर क्यूब है. ओके, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर है, नहीं है, 1 है, और फिर यहाँ पर 0 है. सो m क्यूब प्लस 5m प्लस 3. ठीक है, सो अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो m क्यूब प्लस 3 प्लस 5m दिया हुआ था, तो हमको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है. सो m क्यूब प्लस 5m प्लस 3 ये हमने लिखे. अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट सब क्वेश्चन देखिए. -7y प्लस y5 प्लस 3y क्यूब माइनस 1/2 प्लस 2y4 माइनस y स्क्वायर. सो हियर हाइएस्ट डिग्री, सी हियर फर्स्ट जो है वो वहाँ पर 1 है. ठीक है, सेकेंड पे डिग्री जो है वो 5 है, थर्ड पे क्यूब है, फिर 1/2 एज इट इज़, फिर 2y के पास कितना डिग्री है, 4 है, और लास्ट में कितना है, स्क्वायर है. तो हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना है. तो जो सबसे बड़ी डिग्री है वो यहाँ पर है y⁻5. ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट लिखेंगे. y⁻5 जो आपके सामने अभी दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है, उसको हम फर्स्ट लिखेंगे. सो y⁻5. ओके, दैट मीन्स y डिग्री जिसकी 5 है ना वो फर्स्ट आएगा. उसके बाद हम 3y क्यूब को नहीं 2y4 को हम सेकेंड लिखेंगे, फिर 3y क्यूब को हम थर्ड लिखेंगे. ठीक है, थर्ड टर्म में 3y क्यूब आया, देन माइनस y स्क्वायर लिखे, फिर माइनस 7y आया, एंड लास्टली 1/2 जो कि कांस्टेंट टर्म है जिसका डिग्री 0 है, उसको 1/2 को लास्ट में लिखे. समझ में आपको, यानी कि y5 जो है वो उसका हाईएस्ट टर्म था, तो फर्स्ट उसको लिखे, फिर 2y4 को हमने लिखे, फिर 3y क्यूब को लिखे, माइनस y स्क्वायर जो लास्ट टर्म था उसको लिखे, देन फिर माइनस 7y को लिखे जो फर्स्ट टर्म था, एंड लास्टली माइनस 1/2 को लिखे जिसके पास कोई वेरिएबल नहीं था. इज दैट क्लियर? सो इन दिस वे वी हैव अरेंज दिस इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म. नाउ हियर वी हैव टू राइट द फॉलोइंग पोलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म. अभी कोएफिशिएंट फॉर्म किसको कहते हैं, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ नंबर्स होते हैं उसको कहते हैं कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म जो होते हैं ना वो कांस्टेंट वैल्यू कैरी करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैरी करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल हियर 7y जिसके पास नंबर्स भी होते हैं और अल्फ़ाबेट भी होते हैं, लेकिन हम उसके अंदर से सिर्फ नंबर्स को कंसीडर करेंगे. यह y³ माइनस 2. ठीक है, तो y क्यूब जो है, y क्यूब के पास कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर इनविजिबल 1 है. सो 1 - 2 इज़ द कोएफिशिएंट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को दिखाना है. तो y क्यूब के पास देख सकते हो आप कोई नंबर नहीं है, तो वहाँ पर क्या आएगा, इनविजिबल 1. अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो आप y स्क्वायर है, तो यहाँ पर इनविजिबल 1 है. 7y के पास जो कोएफिशिएंट वैल्यू है 7 है. ठीक है, 1/2 इज़ द कोएफिशिएंट वैल्यू. नाउ हियर y³ माइनस 2 जो है, इसका जो y³ है ना उसके पास जो इनविजिबल 1 है वो कोएफिशिएंट वैल्यू है. ठीक है, वो कोएफिशिएंट फॉर्म है. सो हम उसको कह सकते हैं कि वो कोएफिशिएंट constant coefficient है. So here x³ - 2 is given. Okay, so index of the form is x³
प्लस 0x² प्लस 0x-2। देखो फर्स्ट वैल्यू तो यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है। इसके बाद देखो क्या आएगा, स्क्वायर है तो 0x² लिखे, फिर 0x लिखे एंड लास्टली -2। तो हमने देखो ना क्यूब के पास डायरेक्ट 0 था तो हमको यहाँ पर दो टर्म्स और लगाने थे जो है 0x² एंड 0x। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप डिग्री फर्स्ट में क्यूब है और सेकेंड में 0 थी तो हमने क्या किया, फर्स्ट में क्यूब लगाए फिर स्क्वायर लगाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको करना है ना, इसको स्क्वायर लगाए, फिर 0x के पास कितनी डिग्री है, 1 है। ठीक है, 0x के पास 1 है, लास्टली -2। okay, so you can see here cube, square, 1 and 2 with the help of 0 we have arranged this in a coefficient form. Okay, so as you can see here, write the following polynomial in coefficient form where x cube के पास जो नंबर है वो क्यूब है डिग्री, और उसके बाद डायरेक्ट 2 था तो 2 जो है उसका डिग्री तो 0 है। आप सबको पता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट जो रहता है उसका डिग्री 0 होता है। सो x क्यूब, फिर बाद में 0x² लिए, फिर 0x लिए और लास्ट में क्या यहाँ पर लगाया है, -2 लगाया है। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म में क्या है, 1। ठीक है, 1 0 0 और -2। ठीक है, ये याद रखना। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, x के पास कोई नंबर नहीं है तो 1 है, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद अगेन 0 और -2। ये सारे देखो ना इंडेक्स फॉर्म है, इंडेक्स नंबर है, जो नीचे की तरफ होते हैं ना उसको इंडेक्स नंबर कहते हैं। 5y, द नेक्स्ट सब क्वेश्चन 5y, यहाँ पर कौन सा कोएफिशिएंट है, ओनली सिंगल 1 इज देयर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो डिग्री कितनी है यहाँ पर 1। ठीक है, डिग्री कितनी है 1, लेकिन कोएफिशिएंट वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, तो इंडेक्स इज 5। ओके, सो 5x + 0, वाई, बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थी, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट के लिए यहाँ पर क्या लिया गया, 0। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में -2 था उस तरह से ये क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमने यहाँ पर +2 ऐड किए। तो कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो गया, सिर्फ कोएफिशिएंट फॉर्म बताना है जो इंडेक्स प्लेस पे है, तो 5 और 0। सो 5 and 0 इज द कोएफिशिएंट फॉर्म। Okay, so let's solve sub question 3. 2m4 minus 3m square plus 7. See my dear students, 4 के बाद डायरेक्ट स्क्वायर है, 3 मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, 0m प्लस 0m क्यूब लेंगे। ठीक है, क्यूब इज मिसिंग ना, 4 के बाद देखो ना 4 है, 2 है और 0 है। ठीक है, तो हमको सारे नंबर्स को लेना है। ठीक है, डिग्रीज को देखना है हमको, कोएफिशिएंट चाहिए ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स फॉर्म आर 2m4 पावर जिसका 4 है, फिर लिखेंगे प्लस 0m क्यूब, ओके, प्लस 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज गिवन, सो 0m क्यूब को हमने ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है, सो 2m4 प्लस 0m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 0m। ठीक है, 1 वाला कोई नहीं था ना, इसलिए 0m प्लस 0m लास्टली प्लस 7। सो यहाँ पर कोएफिशिएंट फॉर्म क्या है, 2, 0, -3, okay, 0, 7. So these all are the coefficient form. Always remember, नेगेटिव हमेशा आपको कंसीडर करना है कोएफिशिएंट फॉर्म में। So 2, 0, -3, 0, 7. Is it clear? -2/7, -2/7 ऐसा है जहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर x है ना y है ना a है ना b है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है क्या है, -2/7, सिर्फ इंडेक्स फॉर्म में क्या आएगा, -2/7। सो कोएफिशिएंट फॉर्म भी क्या रहा है इसका, -2/7। वाई, बिकॉज देयर इज नो वेरिएबल्स आर गिवन। इज दैट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? So in this way we have finished question number 6 and question number 7 of practice set 3.1. We have solved all the sub questions. So as you can see here, we have solved, write the following polynomial in coefficient form also. Also we have solved the standard form. Okay, so आप देख सकते हो, आपने देखे कि कोएफिशिएंट फॉर्म में हमने कैसे सारे कोएफिशिएंट्स को कंसीडर किए। Now let's solve question number 8. Write the following polynomial in index form. Now here we are writing this coefficient in index form. ठीक है, so 1, 2, 3 is given. 1, 2, 3 is given. Now here we have to write the index form with the help of this number 1, 2, 3 का यूज़ करके हमको इस नंबर को इंडेक्स फॉर्म में हमको इसको लिखना है। सो हम इसको कैसे राइट करेंगे? So here we have to write this following polynomial in index form. So our question is 1, 2, 3.
तो यहाँ पर ये जो 1, 2, 3 है इसको हम इंडेक्स फॉर्म में बनाएंगे. सो 1 + 2 + 3 ये सबको हम इंडेक्स नंबर पे रखेंगे. ठीक है. अभी यहाँ पर हमको वेरिएबल भी इंक्लूड करना है माय डियर स्टूडेंट्स. हमें यहाँ पर वेरिएबल्स भी इंक्लूड करना है. सो हम यहाँ पर x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, a ले सकते हैं, b ले सकते हैं. जो हमको वेरिएबल चाहिए वो हम अपने एज अ चॉइस से हम यहाँ पर वेरिएबल इंक्लूड करेंगे. यहाँ पर इन नंबर्स के साथ वेरिएबल ऐड करेंगे. देखो ना 1, 2, 3 सब पॉजिटिव नंबर है तो यहाँ पर प्लस. सो हमने 1 के साथ x को रखा, 2 के साथ भी x को रखा. ठीक है. और 3 को हमने कोई नंबर नहीं दिए. ठीक है. क्यों? क्योंकि वो लास्ट वाला कांस्टेंट कंसीडर करें, क्योंकि 3 का जो वैल्यू है 0 रहेगा. ठीक है. सो फर्स्ट हम x² लेते हैं, फिर 1 लेते हैं, फिर 0. 3 के लिए तो 0 आएगा. ठीक है. सो यहाँ पर क्या आया 1x² 2x + 2x 1 + 3. सो फर्स्ट डिग्री कितनी है? स्क्वायर है. सेकेंड डिग्री कितनी है? 1 है. एंड लास्टली 3. सो x² + 2x + 3 इज अवर आंसर. सो द इंडेक्स फॉर्म फॉर 1, 2, 3 इज x² + 2x + 3 because all the numbers are positive numbers. So we have used here addition sign. Is that clear? So 1, 2, 3 जो है वो इंडेक्स फॉर्म में है. ठीक है. सो ये 1 को 2 को और 3 को हमने इंडेक्स के प्लेस पे रखे और इनके साथ हमने क्या इंक्लूड किए? सिर्फ x को इंक्लूड किए. और लास्ट वाले टर्म में देखिए मैंने कोई वेरिएबल नहीं लगाया था. यहाँ पर सिर्फ मैंने x को इंक्लूड किया. सो फर्स्ट x, सेकेंड x. सो 1x + 2x. ठीक है. सो फर्स्ट के लिए हमको स्टैंडर्ड फॉर्म का आपको पता है रूल जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है. तो 2, 1, 0 इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर. ओके. सो हियर 2, 1, 0. ओके. दैट मीन्स डिक्रीज इन ऑर्डर. सो x² + 2x + 3. Is that clear? So we have used all this number. Now 5, 0, 0, 0, -1. So -1 जो है वो आपको पता है वो तो 0 है. ठीक है. सो 1, 2, 3, 4. 4. Okay. So 5x4 + 0x. ओके. बिकॉज कोई साइन नहीं है दैट मीन्स प्लस की साइन है. लास्ट वाले के लिए माइनस है. सो 5x4 + 0x 0x³ + 0x² + 0x -1. Here we can take m also. Okay. So 5m4 + 0m³ + 0m² + 0m -1. देखिए ना सिर्फ लास्ट वाले टर्म में हमने माइनस की साइन ऐड की है और उसको हमने एज इट इज़ रखा है. बाकी यहाँ पर हमने कौन सा अल्फ़ाबेट को कंसीडर किया? m को कंसीडर किया. सो 5m4 + 0m³ + 0m² + 0m -1 एज इट इज़. बिकॉज जो 1 है उसका पावर जो है वो कितना है? उसका पावर जो है वो 0 है. उसका डिग्री 0 है. सो फर्स्ट वन का 4. फिर बाद में आपने देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा? m4 इज़ द ग्रेटर. ओके. 5m4 इज़ द ग्रेटर वन एंड 1 इज़ द स्मॉलेस्ट वन. तो ये जो 0 है उनको हमने कंसीडर नहीं किए. ठीक है. 0 को हमको कंसीडर नहीं करना है यहाँ पर सिर्फ हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है. तो हम क्या बताएंगे? 5m जिसका पावर 4 है और -1 जिसका पावर 0 है. तो ये बाकी के 0 को कंसीडर नहीं किया जाएगा. सो हम लिखेंगे 5m⁴ -1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन -2. Okay, bracket -2 then (2) then -2 then (2). ओके. सो अब इसे हमको पहले इंडेक्स फॉर्म में लिखना है एंड देन लास्टली हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव है. ओके. फर्स्ट वन इज़ द नेगेटिव नंबर एंड सेकेंड वन इज़ द पॉजिटिव. ओके. सो हियर 2m³ + 2m² + 2x³ -2x³ + 2x² -2x + 2. ओके. तो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कैसे लिखे सारे कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को पहले. ओके. सारे इंडेक्स नंबर को फर्स्ट लगा लिए और लास्ट में यहाँ पर x³ x² x और लास्टली जो है वो 0 यानी कि 2 जो है वो 0 कंसीडर किए. तो इसका इंडेक्स फॉर्म जो मिला हमको क्या मिला? -2x³ + 2x² -2x + 2. ओके. सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो क्या लिखेंगे हम? तो सबसे पहले 2x² जो है वो हम फर्स्ट लिखेंगे. देन -2x. ओके. सो हियर -2x³ + 2x² -2x + 2. इज दैट क्लियर?
सो दिस आर द इंडेक्स फॉर्म. इंडेक्स फॉर्म जो होते हैं उसको हमको नीचे की तरफ लिखना है, और जो डिग्रीज होती है वो हम हमेशा ऊपर की तरफ लिखते हैं. तो 3, 2 जो है 3, 2, 1 ये सब क्या है, डिग्रीज है. और -2 +2 -2 +2 ये सब क्या है, इंडेक्स फॉर्म है. इज दैट क्लियर? सो दिस ऑल आर द इंडेक्स फॉर्म. ओके, सो हमने ये जो इंडेक्स नंबर्स थे इससे हमने कुछ मतलब पोलिनोमियल का यूज़ किए हैं. और वो कैसा यूज़ किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, जिसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, जहाँ पर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर तक लेते नंबर्स फिट करते हैं डिग्रीज में. ठीक है, आप देख सकते हो ना यहाँ पर डिग्री में सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 3 है. फिर उससे लोएस्ट नंबर क्या है, स्क्वायर है. फिर उससे लोएस्ट नंबर 1 है. फिर सबसे लोएस्ट नंबर इज 0. दैट मीन्स द इंडिविजुअल 2. ठीक है, तो 2 के पास कोई वेरिएबल नहीं है. दैट मीन्स वहाँ पर क्या है, 0 है. 0 वेरिएबल. 2 इंडिविजुअल अकेला है तो उसका वेरिएबल कितना है, 0 है. My dear students, today we have completed practice set 3.1 all the 9 questions. Now your task is to solve all the questions in your Maths 1 notebook. Thank you for watching my video. Please do like, subscribe and share my video.